of you hear my voice clearly? Please give me a quick confirmation. Yes, all of you. Very good morning to all of you. Yes. So today is a very exclusive session we organized because yes, because Nifty is around the important support zone, right? तो अगर यहाँ से निफ्टी में next move आती है, then it will definitely be a big move in the Nifty. Plus, we can make a lot of money following the next move in the Nifty. So what we are going to do in today's session, today's a live trading session, is that we are going to discuss about Nifty and Banknifty and what all are the future expectations into Nifty and Banknifty, what all future moves are expected in Nifty Bank, and then we will decide on a trading strategy. So the idea is not to make a day strategy only, but to make a strategy which can give you profit this week, right? So are you all ready? Yes, guys. Are you all ready? Yeah. Okay. So let's move on and start the analysis part. Meanwhile, people are joining. So this is how is the Nifty, and I will start with a moving average analysis. Now here, if you see, right, what happened yesterday? कल के दिन में क्या हुआ? This is where our market opened, and you can say, okay, it moved in a range and then it closed somewhere around the 200. अब 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज होता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेज एज फार एज योर ट्रेडिंग पार्ट और इन्वेस्टिंग पार्ट इज कंसर्न्ड एज अ ट्रेडर. कल हमने देखा, बिकॉज इफ यू सी द एंटायर मूव, ये जो फॉल आई थी निफ्टी में, आफ्टर लेट मी exit all the other indicators or other moving averages, right? Now if you see here, you know, ये जो फॉल आई थी बाजार में, कैन ऑल ऑफ यू सी दिस फॉल, राइट? ये फॉल जो बाजार में आई थी, गिरावट ऐसे गिरा, उसके बाद बाजार ऊपर गई, पुल बैक, फिर नीचे गिरा, यहाँ पे बॉटम बनाया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, पर ये जो 200 वाला रेजिस्टेंस था निफ्टी में, इट क्रॉस्ड विद अ गैप, देन इट टेस्टेड, इट अगेन टेस्टेड, दिस इज कॉल्ड एज रीटेस्टिंग. तो पहली बार में टेस्टिंग हुई, फिर रीटेस्टिंग हुई, एंड इट वेंट अप. आफ्टर मेकिंग अ हाई, it fallen down and right now it is back to 200. तो अगर हम पूरी कहानी देखें, this fall was also expected because if you draw a line here, you see this is where price found resistance significantly. ठीक है, तो this was a zone जहाँ पे प्राइस को एक सचमुच का एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिला और वहां से प्राइस फॉल हुई. नाउ द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर इज हाउ लॉन्ग इट विल कंटिन्यू टू फॉल. ठीक है, या फिर अभी का जो लेवल है 17,100 से लेके 200 की जो रेंज है निफ्टी में, इज दिस द स्टॉपिंग पॉइंट फॉर निफ्टीज नेक्स्ट अप मूव? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम 17,100 के नीचे बंद होते हैं, can we go back towards 16,800 or this time maybe a 16,600 or 400? So there are many questions which are arising and which needs to be cleared at the current market price. Are you all with me till this point? Right? अब यहाँ पे क्या होगा? Because this yes, this time if we draw a retracement here, ये जो पूरी मूव आई है, the low was of 15,671. From there we went all the way up to 18,114. और अब इस पूरी मूव का अगर हम रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें, तो दिस इज एट 38% रिट्रेसमेंट. सो वी ऑलरेडी डिड अ 38% रिट्रेसमेंट टू द प्राइस. Now my sense is, right, there are three things which can happen, but three cases are there which we will discuss in today's session. Let's understand them one by one. Yes, पहली चीज जो आज के बाजार में हो सकती है, let me write the case number 1.
Yes, can all of you see the whiteboard? I'll use a blue pen here and will write the case number 1. Now your case 1 is, पहली चीज ये हो सकती है कि निफ्टी may find a support at 17,100 zone. Now zone का मतलब ये नहीं होता कि exactly 17,100. Zone का मतलब होता है कि price created a zone, like yesterday it made a low of 17,067. तो 30-40 पॉइंट नीचे, 30-40 पॉइंट ऊपर, मतलब 17,050 से लेके 17,150 या 17,200 का जो जोन है, जो दायरा है, that merely is your 17,100 zone. ठीक है, so the case number 1 here is that price may find support in the zone. Let me write the zone 17,050 to 17,150, right? It's a 100 points zone, or price may find support in this zone and should bounce back. ठीक है, एक नंबर, पहला नंबर केस ये हो गया. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस केस ऑन द चार्ट्स. देखिए, इस पूरी मूव में हमने 38% का करेक्शन किया. तो अगर निफ्टी की करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, विच इज आवर केस नंबर 1, वी कैन एक्सपेक्ट ए मूव दिस टाइम बैक टू द हाइज. कितने लोगों को ये बात समझ में आई? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स. समझ में आई सभी को ये बात? क्या होगा? यस, yes, you guys can chat in the comment box. Type your chats in the comment box, right? अब यहाँ पे अगर हम देखें, right, if this is held by the price, अगर निफ्टी 17,050 से 150 के जोन को बचा लेती है, तो फिर जो नेक्स्ट मूव आएगी, दैट विल नॉट बी अ शॉर्ट मूव, राइट? That will also be a big move, and that big move will be back towards 18,577, which is almost your this height. 604 का ये हाई था, 577, 604. That means कि उसके बाद निफ्टी हाइस को जाके टेस्ट वेस्ट करेगी. This is your case number 1. So coming back to this, अगर केस नंबर 1 होता है, तो what is expected? Should bounce back towards the all-time high. ठीक है? Now understand the case number 2. This is your case number 1. Case number 2 says that, okay, if it fails here, right? If it fails to survive in the zone of 17,050, then the biggest support zone for this is the 50% retracement level of the overall move. So overall move का 50% retracement zone is around 16,890, right? तो उस केस में case number 2 is, let's write it here, right? Case number 2 हमारा कहता है, if it fails to hold 17,050 to 17,150 zone, it may fall till 16,850 to about 16,800, and then may bounce. This is your case number 2. And what is your case number 3 is that, right? So let's understand this on the chart. दूसरा केस ये कहता है कि अगर निफ्टी इस पे फेल हो जाती है, right? Let's go to a 60-minute chart. Now, if Nifty fails in this zone, it may then fall back towards this 850. Yes, this
850 टू 800 जोन, राइट। ये जो 50% जोन है निफ्टी का 893, तो इस जोन तक फिर निफ्टी आ सकती है, 800 850 के जोन तक निफ्टी आ सकती है। यस, all of you, if you want you can turn on your cameras, no problem guys, yeah, if you want you can please turn on your cameras, no problem. तो दिस इज योर केस नंबर सेकेंड, और उसके बाद प्राइस में बाउंस आ सकता है। थर्ड नंबर केस इज इफ निफ्टी फेल्स एट 16,800 which is very less likely to happen. अगर तीसरा नंबर केस ये है कि इफ निफ्टी fails to hold 16,800, then what? Then let's go back to the chart and figure out what can happen then. अगर निफ्टी 16,800 पे भी फेल हो जाती है, then a move towards 16,350 to 16,000 is possible, right? So that will be the worst case which can happen. Then if free fall, I would say, एक जो free fall आ सकता है, free fall towards 16,300 to 16,000 is possible. These are the three cases which can happen in Nifty. Now, if you ask me how much percentage there are chances, so I would say 60% chances are that case number 1 will happen. Yes. Then 30% chance है कि हमारा case number 2 हो सकता है, and only 10% chances are there. 10% chances are there of this case number 3 to happen. तो सिर्फ 10% ही चांस है कि हमारा केस नंबर 3 होगा। yes? तो इस तरीके से आपको ट्रेड्स को फिगर आउट करना। समझ में आई बात सभी को? कैसे हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है बेस्ड ऑन द प्राइस मूव, बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन, based on the probabilities in the market. These are the three probabilities which can happen in the market. First one, let's revise them. या तो निफ्टी 17,050 17,150 के जोन में सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस बैक करेगी। अगर यहाँ से बाउंस बैक करती है देन अ न्यू ऑल टाइम हाई इज एक्सपेक्टेड। Second thing is that if Nifty goes down and if it fails into 17,050 zones, and if it then it may go down towards 16,800 to 850, तो फिर ये वाला जो zone है, let me just create a zone here. This sort of zone should be tested. ये वाला जो zone है ये टेस्ट कर सकती है प्राइस, ठीक है। और इस जोन के टेस्ट होने के बाद अगर प्राइस बाउंस करती है then a new high is not expected in the Nifty, but a retesting of 18,000 18,100 again is expected. तो यहाँ पे इस केस में फिर रीटेस्टिंग नहीं होगी, लेकिन इस केस में फिर what you can expect, then it may bounce back till 900 to 18,000 अगेन, ठीक है। और अगर निफ्टी का केस नंबर 3 होता है जिसकी सबसे कम संभावना है कि 800 के जोन में भी फेल हो जाए, तो उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि निफ्टी वापस इस जोन में या फिर अपने लोस को टेस्ट कर सकती है। तो इस केस में फिर क्या बनेगा वो आगे देखेंगे, ठीक है। बाउंस कहाँ से आएगा, बॉटम कहाँ पे बनेगा। But if you ask me, case number 1 is more likely to happen, and right now I have long positions in the market with all my students. We all had a long position in the market in the expectation that Nifty should find support in this 17,050 zone. तो हमने कल भी बाइंग की थी और उसी बाइंग को हम आज भी कैरी कर रहे हैं बाजार में इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ बिग मूव अगेन।
ठीक है, because what will happen that time will tell us, but what to do right now is what makes you a trader. ठीक है, तो आज अगर आपको ट्रेडर बनना है तो यू हैव टू रिएक्ट ऑन व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. And what is happening right now, if you look at the price action, price is trying to hold the level. Am I right? Price यहाँ पे क्या करनी चाहिए? As a price action trader, you may figure out that price is trying to hold the level. Price की इच्छा या price के intentions क्या लग रहे हैं? It is trying to hold the level, right? So this is how you have to do the analysis, and you have to make your strategy as per the analysis. Now let's move on to the bank nifty, and to the bank nifty is outperforming nifty, you can say. क्योंकि अगर हम निफ्टी देखिए 0.18% अप है, लेकिन बैंक निफ्टी 0.28 ऑलमोस्ट. सो इफ यू कंपेयर द टू, बैंक निफ्टी सीम्स स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी टुडे, राइट? Now let's analyze the bank nifty. बैंक निफ्टी में हमने देखा सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक अगर कुछ है तो एचडीएफसी बैंक है. एवरी डे इट इज फॉलिंग 2, 3, 4, 5%, एंड आई थिंक दीज लो शुड बी टेस्टेड. 1300 के लेवल्स हमको फिर से देखने को एचडीएफसी बैंक में मिल सकते हैं. Rest of all are doing good, only this had problem. Or we are long in LT, Hindalco, and what was Reliance? Yeah, Reliance done what a move in Reliance. Reliance ने तो आज दिल जीत लिया. What a 3% candle, and this is exactly what we all Kirti Agrawal traders do. This is what? This is the completion of the correction. यहाँ पे क्या हुआ? As per the price action, this was your first move to upside, and after this first move you got this correction, and if you all remember, we bought it exactly at 20, and this is what we are riding, and soon it should hit a new all-time high. That sort of potential Reliance has. Reliance is having fantastic, excellent, mind-blowing move in Reliance, right? Let's go to the Bank Nifty. Bank Nifty देखते हैं क्या हुआ बैंक निफ्टी में. बैंक निफ्टी विल ऑलवेज अंडर परफॉर्म. पहली बात तो आप ये सब समझ लीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी इज अ बैंकिंग एंड एनबीएफसी इंडेक्स, तो उसमें उसकी चाल अपनी है. निफ्टी इज अ वर्सेटाइल इंडेक्स, सो इट हैज अ डिफरेंट मूव, राइट? तो यहाँ पे अगर हम देखें ये पूरी चाल आई. यहाँ पे प्राइस पहले 200 पे प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद it went down again, it tried, and this was a jumbo candle, I would say. With this jumbo candle it went up, again came down, stuck at 200, and this is how is the price action so far. अब अगर हम पूरी मूव का देखें तो it will be around 23% only, I guess. It is even not a 38.2%, right? You see, we are before this only. तो अब यहाँ पे on a 60, if you see, we are again trying to move up. So Bank Nifty has a different pattern than Nifty, and if you want to go long, you can go long in the Nifty Bank, and a move back towards 37,200. मतलब अगर हम मौजूदा स्तर से देखें 400 पॉइंट से 600 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में आ सकती है. Yesterday's low is a fair stop loss for this. State Bank did well, 1.5% up, yeah, moving up. So banks are looking good today and may continue to move up. Yes, banks are looking extremely well, और आज banks भी ऊपर जा सकते हैं, right? This is how is your Nifty complete analysis. So those who want to go, they can remember these 3 cases in the Nifty, as our today's topic is profit making opportunities in the Nifty. तो आप सभी निफ्टी में तीनों में से जो भी केस आपको होते हुए दिखता है, आप उस पे अकॉर्डिंगली एक्ट करके यू कैन मेक मनी. एंड दिस एनालिसिस इज नॉट ओनली फॉर अ डे और 2 और फॉर अ वीक, दिस इज फॉर द एंटायर अप्रैल सीरीज. तो आने 28 तारीख को हमारी एक्सपायरी है अप्रैल महीने की, और इन 10 दिनों में 10 कैलेंडर डेज में जितने भी हमारे ट्रेडिंग डेज हैं, 7-8 ट्रेडिंग डेज जितने भी होंगे, उसमें हम एक बार फिर से इन तीनों केसेस में कोई भी एक केस होते हुए और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड्स आते हुए, टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं. तो कीप दीज थिंग्स इनटू माइंड एंड मेक मनी. या
All right. Anything else that you want me to cover in today's session? Anything else?